We will also share in the meanwhile, we'll share the YouTube link also on the group. So those who cannot join the meeting, they can directly see the. को लेकर आए केंद्रीय भंडार से ब्राउन नहीं होते अभी यहाँ कंट्रोल उनके पास कुछ भी नहीं आता ही नहीं है. So I request everyone to kindly keep their mics on mute till the time they are speaking, and obviously there will be a very interesting discussion session today. I very warmly welcome every single person who's joined us, who's been able to join us on such short notice on this very intriguing topic of views of Dr. Ambedkar on the perspective of equality. So again, I understand that there's a lot that can be said, but you are not here to listen to me. So I will obviously not want to take a lot of time, and rather I would straight away want to jump to introducing our faculty today. So he's a very beloved person in the Honorable Supreme Court Bar Association. I've had the good fortune of having this opportunity to invite sir, and he has very graciously accepted to be part of our initiative and very humbly contribute to this noble cause. So we have with us today Shri KKL Gautam ji. He is an advocate practicing at the Supreme Court of India. Sir's full name is Kaushal Kishore Lal Gautam. He was born in 1977 and belongs to district Deoria in Uttar Pradesh. He was educated in Lucknow up till class 12th in Kendriya Vidyalaya, Gomti Nagar, Lucknow. He did his law from Lucknow University in the year 2002. After completing his LLB, he enrolled as an advocate in Bar Council of Delhi in the year 2003. And he started his practice at Allahabad High Court at the Lucknow bench and appeared exclusively in the High Court and has conducted various matters in writ court jurisdiction, constitutional matters, service law matters, civil law matters, criminal law, and actually there's a lot much more. I'll be honest with you. We were just going through the introduction for sir, and it's very unique that I will not be able to cover everything. I will try to share his introduction in the WhatsApp group as well. So apart from that, sir has been practicing since 2005 onwards in the Supreme Court on the civil side, specifically with respect to constitutional matters, mostly relating to Bahujan communities like reservation in promotion, SC/ST Act, Atrocities Act, etc., and has filed a writ petition in the Supreme Court of India to declare Ayodhya as Buddha Vihar under Section 3 and 4 of ASI Act, which is still pending. So has done his post-graduation diploma in international environment law from Indian Society of International Law, opposite to the Supreme Court of India. Sir has been giving his services to various organizations and is on the panel for Hemvati Nadan Bahuguna Uttarakhand Medical Education University, ONGC, GAIL, or Indian Oil Corporation, Sefai Medical University, Etawah, etc. So is a member at the Honorable Supreme Court Bar Association, Delhi High Court Bar Association, National Consumer Dispute Redressal Commission, amongst others. Again has Sir's father is a retired army personnel. His mother is a housewife. There are 4 brothers and 1 sister. Sir's wife, ma'am, is a class 1 officer working as an executive engineer in irrigation department of Uttar Pradesh. And he has 2 daughters. One is studying in class 8 and the other one is in class 3rd. So apart from that, very interesting thing I want to share with respect to Sir is that Sir was also counsel in the much published landmark judgment in loan harassment case before the Honorable Chief Justice Court at the Honorable Supreme Court of India. He has also challenged the excise policy of the government of Uttar Pradesh before Honorable Supreme Court on behalf of the liquor contractors in the excise case. He has argued the matter involving Army Act 1950 independently before the Honorable Supreme Court, wherein the court was pleased to condone the delay of 32 years and have issued notice with respect to the same. So with such a brief, again, this is a very brief and a very humble introduction to Sir, and I very warmly welcome Sir, and I request you to kindly take forward the class and enlighten us with respect to such a wonderful. Down that way.
we start the class, I very humbly request everyone to kindly just keep their mics on mute, and we'll have a elaborate question and answer session. I once again very warmly welcome every single person who has joined the class over here with us on Zoom platform, as well as people who are joining us on YouTube. So I very warmly welcome all of you, and thank you so much, Gautam sir, and I request you to kindly take the class forward. Thank you, Keshav. Thank you for inviting me. Can we see everyone on the screen? Is it possible or? So we'll keep it like that. That people. So again, I just request everyone to kindly turn their cameras on. Camera on so that I can reach everyone. So anyone who can and who can will be really great. It will actually be really great if people can turn on their cameras. That will be really very interesting for us. So that's also requested. But in the meanwhile, as humbly request you to kindly Please. class forward as per yourself. Thank you, Keshav. As you introduced me in a very wide manner. Good evening, everyone. As you know, myself, KKL Gautam, Advocate, Supreme Court. Since I am practicing in Supreme Court. Now the topic is view of Dr. Ambedkar. And this April month is a very important month for all of us because on 14th April, we have celebrated Baba Sahab birthday anniversary in the Supreme Court itself. It is a history in the Supreme Court that after independence, first time we have celebrated Baba Sahab Ambedkar birthday in the premises of the Supreme Court of India. Our Chief Justice of India and Justice B.R. Gavai, Justice Supreme Court of India, has participated with us, and we are very happy that the judges have spent with us more than 25 minutes. So the view of Ambedkar is equality. Equality because before independence, before Constitution of India, we don't have liberty which we have like a this. So after independence and after having the Constitution of India, we each and everyone have their own independency and equality, and mostly the marginalized society of this country have gained so many things like respect, power, equality, no discrimination, and everything. Before that, before the Constitution of India, some people have no right to have education. After the Constitution, we have that right to have education. Therefore, the government of India and state government have given the education free of cost up to the class 8th. So the view of Ambedkar is only for the not only for the marginalized society, the equality and everything given in this constitution for all. Some people have confined him for the particular society of the caste, but he have given right to each and every citizen of this country, especially for the women. Earlier, women have no rights. They have right, but very few rights they have. After the constitution, that every woman have much rights and they have equality right, that what they want, right? Just like we know that in property, earlier the women have no right in the property, which was introduced in 1950 also, but it was not implemented. But later on, after the one case decided by the Supreme Court in 2005, each woman have right in property also. So specifically, women have more right after the Constitution. They become independent, liberal. They are fighting with each other in every aspects, like they in the job also, in other fields also. So today we have lots of contribution of Baba Sahab today.
the main articles which was introduced by the Baba Sahib is fundamental rights, which we know each and everyone. So likewise, we have fighting spirit towards our rights, so that our these courts and other governments have protected us by the way of constitution. As I introduced that the participants of today is mostly the newcomers, students, and beginning lawyers who are in this profession. So first we know that the people are generally know about the theoretical knowledge, but what we have today, this we know some, we want to know some that practical knowledge, that practice and procedure is totally different from our theoretical knowledge. So it is my advice for each and everyone, if you are interested in practice, so first we have to read the Constitution of India, because all the laws governed by the Constitution of India, other laws, IPC, CRPC, CPC, evidence, arbitration, every law is governed by the Constitution of India. So if you know the Constitution, if you know the interpretation of the Constitution, what does it means, what really Constitution of India means, so it is very easy for all of us to practice in any court. Any court, it means either a Tehsil court, district court, high court, or either a Supreme Court. And if you want to really practice, so it is my advice for newcomers, please attend court each and every day, because in each and every day we learn some new things in the court itself. Because till date I am also a learner, because today that courts always teaches you as much as you spend time in the courts. So it is my advice to each and everyone to attend the courts. Keshav? Yes, sir. Anything? Sir, absolutely audible. I have to discuss some cases also. सर जो आपका अगेन आपकी सर आपकी श्रद्धा है, हम तो सारे आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपको आप सर अगेन आपकी एब्सोल्युटली No, I have introduced myself. I have given some brief about the practice. So the view of Ambedkar, each and everyone knows that what is the view of Ambedkar is uniform for each and everyone. If there is a student, so I will speak on how to practice. जैसे सर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी मैं थोड़ा पढ़ रहा था कि अंबेडकर सर का थोड़ा मतलब ही हैड सम थॉट्स, आपने भी मेंशन किया था, एंड आई वाज जस्ट वेरी क्यूरियस ऑन दैट फ्रंट कि व्हाट एग्जैक्टली आर दीस थॉट्स। सर इक्वालिटी की जैसे जो बात की जाती है कि सर चैलेंजेस में आपको अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली एक पल को हम बात करके देखें तो सर चैलेंजेस किस किस्म के चैलेंजेस हैं जिनको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओवरकम कर पाता है, और किस किस्म के कानून हैं जो कि वास्तविकता में एक इक्वल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश करते हैं। There is no as such challenges, because in the constitution we have only opportunities. There is no any kind of challenges. So opportunity is more in the constitution, as much as we read the constitution. Yes, Keshav? Absolutely, absolutely. So जैसे अंबेडकर सर की जब हम बात करते हैं तो क्या ऐसी चीजें हैं जो कि प्राइमरीली विच वी मे थिंक आर डायरेक्टली थिंग्स विच वुड बी एब्सोल्युटली कंट्रीब्यूटेबल टू सर्व, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग जिस किस्म से की गई है, जिस वक्त किया गया है, what are the underlying principles जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सर यूनिक बनाते हैं या फिर थोड़ा किसी किस्म से
उसके अंदर जो सर जैसे बोलते हैं कि एक उसकी जो आत्मा जिस चीज को बोलते हैं जो स्पिरिट की कॉन्स्टिट्यूशन. Correct. The Atma to jo is, as we say that the Atma to Article 368 is the main of the Constitution of India. Basically, the Constitution that Baba Sahib framed it from the Buddhism, and we know that Buddhism is more than 2,500 years ago. At that time, we have democracy. At that time, also we have democracy. So Baba Sahib adopted the Buddhism, and the constitution, basically our constitution is based on the principles of Buddhism, because Buddhism say only about the middle path. So in the Constitution of India, Baba Sahib tried to frame the constitution according to the situations of Indian civilization, because Buddhism is from the India only, and we have just left it the main civilization of India because of the Mughals and British government. After framing the Constitution of India, Baba Sahib regained our old civilization in the Constitution, and the old civilization is in the Constitution, and therefore we are very easy with the Constitution, so that everyone have their own right. So the democracy is mainly comes from our Indian origin. It comes from India, from the Buddhism. And you know that after studying abroad, other countries, before our constitution, so many countries have their own constitution. So Baba Sahib have thoroughly studied the constitution of each and every country, and Baba Sahib taken the good things from there and tried to frame it in the Constitution of India. So it's a very fascinating thought what you just shared, and it actually sort of brings me to a thought. And sir, we're just discussing views for everyone. Again, this is just an academic discussion, and it's a study group. So I request everyone, because Sir has a very unique manner of taking the class, that it should be. No, basically, I am saying that I am not a lecturer or professor. So I have some practical knowledge. So therefore, I am not able to give lecture 1 hour and 45 minutes. It's like that. As much as query you can raise, I may reply. Fantastic. Actually, sir, it's very nice, because this is something which we've discussed quite a few times. Therefore, earlier I have told that if we have some camera faces before us, so that we link each other and we talk it. Absolutely, absolutely. So I'll request everyone that we usually take question and answers in the chat box. So if someone have any queries and any doubt about the practice, Constitution, Supreme Court, High Court, articles. Sir, Naqvi sir is also here, but I think yes, I saw him. I saw him on the screen. Yeah, I am actually very keen to. I hope that our audio is at least going across to him. He is obviously not coming to us right now, but I'm very curious and keen to hear what he also has to say. In the meanwhile, I'll request everyone else also, since it's a very unique topic, that if there are any thoughts or very, any. I think anyone who has any questions, I'll request that, it's a very good opportunity to discuss this. And yes, please open your camera. I request everyone, please open your camera. Yeah, that we keep discussing the Constitution, and it's such a heated thing. So, sir, again, in the meanwhile, again, I request everyone, because most of the time what happens is that I only keep asking questions. So मेरी सबसे request है कि जिसको question पूछना हो वो पूछेगा, ठीक है? आज तो बिल्कुल पूछेगा, but तब तक मैं अपने सवाल पूछूंगा. So VG के कृपा sir is also joined us. So it's that this happening once again. So sir, one question that I have is that, sir, we speak about equality. Sir, what is equality? I request anyone who's not asking a question to just keep their mics on mute in the meanwhile.
But I hope my audio is getting across. And so Gautam, so this is one Sir. question that I have, and it's a very intriguing question. हाँ और मुझे I'll be honest with you, मैं पढ़ा मैंने बहुत तरीकों से, लेकिन considering that it's a question of a constitutional interpretation, तो मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे पास तो कोई definitive answer है नहीं इसमें. But sir, आपसे ही मैं एक पल को जानना चाहूंगा कि what exactly is the definition of equality? Equality क्या होती है sir? equality, it varies according to situation, circumstances, and Supreme Court defined it so many times in a different way. Basically, equality is for everyone should have equal rights in their own country, and there are lots of rights. You may interpret each and every personal rights. So equality have not exact definition. It is interpreted by the Supreme Court only, time to time. So therefore, we have lots of cases in Supreme Court and other courts also on this equality. So exactly, we don't have any kind of definition. It is already in the Constitution of India. Each and every person in this country have equal rights. तो सर तो जो सेमिनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की ऑन आर्टिकल 14, this is a question that I've received from Naqvi sir. So he says, what exactly can you please just shed some light? आप अगर कुछ भी हमें बता सकें इस चीज के बारे में, जो सेमिनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की ऑन आर्टिकल 14, क्या सर आपके इस रिस्पेक्ट में कुछ ख्याल हो? और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर नकवी सर, इट विल बी रियली ग्रेट नकवी सर इफ in each and every writ petitions, wherever we file under Article 226 or Article 32, we are using Article 14 and 16. You may fit Article 14 and 16 everywhere. If you file writ petition PIL under Article 32 in Supreme Court, like that, I have filed reservation promotions cases in Supreme Court. In that petition, in the writ petition itself, we have mentioned Article 14 and 16. Even in the Ayodhya Buddh Vihar matter also, that on my behalf, my client, Article 14 is involved in that. So whenever we use Article 32, 226, wherever we use for our fundamental rights, so Article 14 you will fix it anywhere. It is a matter of court to decide it, interpret it, whether your right was infringed or not. So today, if we have definition of equality, so there is no any ambiguity. But today we have lots of cases still pending in Supreme Court and High Court on our equality and Article 14, 16, 19. Still so many cases are pending. Naqvi sir is senior to me, more than senior to me. If you know anything about Article 14 and equality, he may share his view. Naqvi sir, it will actually be fantastic. VG K Kinta sir is also here. VG K sir, it will be really great. So we're just trying to discuss this question of what exactly is equality, and I actually want to very humbly open the platform for everyone in this respect. Yes. What exactly do you understand by equality? Anyone, it's a really intriguing thought. And Naqvi sir, if the audio is going across to you. So we'll come back to Naqvi sir as soon as this is possible. In the meanwhile, VG Kinta sir, are we audible to you, sir? Okay. So Kinta sir will not be asking a question right now. That's fair enough. But in the meanwhile, so very intriguing things
So again, so since you've already been part of a lot of matters with respect to the Bahujan community, so what exactly is your thought on reservation in promotion? Reservation promotion, huh? Yes, sir. Reservation in promotion is basically governed from M. Nagaraj versus Union of India, 2006 8 SCC 212 page. So first time this question was raised after the Indra Sahni judgment, 1992. After 1997, the government of India introduced first. There was one catch-up rule. If the marginalized society of this country, marginalized society means SC and ST, reservation promotion is implemented only on SC and ST cases, because earlier they are not able to reach on the highest post. Highest post means this. Suppose that one candidate has qualified for IAS officer post, but he is not able to reach on the post. Highest post means chief secretary post. तो इसमें जाके तो आपको बोलना होता है तुम्हें. Hello. Yes, sir. Sorry, sir. He is not able to reach on that highest post as chief secretary. So there, before reaching there are lots of hurdles, and the. क्लिक करेंगे अब आप बोल सकते हो. I think Hello. सवाल पूछना चाह रहे हैं जी सर. They are not able to reach on the highest post. So previously that M. Nagaraj, there was a catch-up rule. If scheduled caste, scheduled tribe, they are not getting their seniority on time, so they may compete with the general candidates. And if the general candidates, suppose that 5th rank is scheduled caste and 4th rank is general candidate, if the scheduled caste who is junior to general category, he got promotion before the general category, before time, and after some time, if the general category got the promotion, so he may not be below the reserve category, he may regain his seniority about that person. So there are lots of confusion in that procedure. So therefore the reservation promotion was introduced in M. Nagaraj. M. Nagaraj have fixed some criteria for reservation promotion, like quantified data, backwardness, and inefficiency. Inefficiency is for everyone. Backwardness is already intact with the scheduled caste, scheduled tribe people. Only the question is quantified data. Who will say this? The representation of scheduled caste, scheduled persons are not properly represented. Like scheduled caste, scheduled tribe persons have 21% reservation. Scheduled caste at 21 and 15% scheduled caste and 7% that scheduled tribe. Total is 22.5%. So it means the 22.5% scheduled caste, scheduled tribe person have the representation in the services, but they are not getting it. Therefore, the criteria is fixed by the M. Nagaraj. But there is again ambiguity on the quantified data. Sometime, as and when quantified data is given by the government department, court says no, this data is not correct. If they are not giving their data, they are saying in the absence of data you are not entitled to get the reservation promotion. Therefore, we have challenged the M. Nagaraj, and M. Nagaraj was set aside by the Jarnail Singh in 2018. Jarnail Singh said that quantified data is not required in case of reservation in promotion. Jarnail Singh said that quantified data is not required in reservation in promotion cases. If the government wants to give the reservation promotion benefit to the scheduled caste, scheduled tribe person, so they have to collect data class wise. Class wise means class 1, class 2, class 3, class 4. Earlier, what they are doing, they are club all the classes, group D, group C, group B, and group A. Because of this group collection, the representation go higher than the representation of 21%.
22.5%. So therefore, court direct the data should be collected class wise, not group wise. So it is therefore the M. Nagaraj was set aside in Jarnail Singh, and after Jarnail Singh, the government of India issued so many notification to the state government to comply that judgment. So after that, there are some rosters also is going on. That earlier 100-point roster, after that 13-point roster. So there, it totally depend upon the government how to implement the judgment. Because Baba Sahib told in the earlier when he was introduced Constitution of India that उन्होंने ये बोलता कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको यदि इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे हैं तो अच्छा साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि इसको चलाने वाले लोग अच्छे हो तो अच्छा साबित हो जाएगा, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि इसको चलाने वाले लोग अच्छे हो तो अच्छा साबित हो. Totally, it is a part of interpretation, how we interpret, how the government interpret it. So therefore, we have lots of cases in Supreme Court because of interpretations. So this is a brief idea about the reservation promotion. Yes, Mr. Keshav. So, sir, another question which comes from this, again, a very technical issues, and I'll be very honest with you, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जो आप एक कम्युनिकेशन और एक कन्वर्सेशन इस रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, मेरे को ऐसा महसूस होता है, बट हम ये कर भी इसीलिए रहे हैं बिकॉज हमें कहीं ना कहीं सीखने की कुछ जैसे जिज्ञासु जो लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का ऐसा महसूस होता है कि एक अभाव है. It's not necessarily that all correct information is coming across because most of the initiatives or wherever we get information from, कहीं ना कहीं उसमें जैसे बात होती रहती है कि कुछ बायस है या फिर कोई एजेंडाज होते हैं. तो उसके रिस्पेक्ट में सर मेरे को सर अगेन द रीजन व्हाई मैं तो यहाँ पर बैठता हूँ सिंपली बिकॉज मैं तो एक लर्नर हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट के तौर पे, और मैं एक स्टूडेंट के तौर पे मेरे सारे सवाल और मेरी जितनी भी क्वेरीज रहेंगी वो रहेंगी, और यहाँ पर भी हम जितने सारे स्टूडेंट्स ही हैं. तो हमारे रिस्पेक्ट में सर मैं एक बेसिक आपसे एक वो समझना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जिस एजेंडा के साथ जो इक्वालिटी का जो आइडिया जो अंबेडकर जी का रहा है, क्या वो उतना एफिकेशियसली आज की तारीख में जितने एग्जिस्टिंग कानून हैं, जैसे सर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के ऊपर भी आप काफी काम करते हैं, कि क्या वो इफेक्टिवली इक्वालिटी का जो पैमाना जो समझा गया होगा, क्या वो उसके आसपास है? मैं और सर ये सिर्फ कोर्ट्स तो एक जगह है अपनी, बट एक समाज है जिसके लिए कोर्ट्स सारे एग्जिस्ट करते हैं. तो क्या सर समाज में किसी किस्म का कोई बदलाव या फिर क्या समाज में किसी किस्म का एक इफेक्टिव जो यूटिलाइजेशन बोलते हैं, क्या कुछ सर ट्रिकल डाउन हो रहा है क्या? नहीं, चेंजेस देखो, आफ्टर कंस्टिट्यूशन चेंजेस तो लॉट्स ऑफ चेंजेस है, बट बात ये है कि समवन आस्क मी व्हाट इज अम्बेडकरिज्म, व्हाट इज अम्बेडकरिज्म. Ambedkarism is nothing but only correct implementation of Constitution of India is Ambedkarism. Simple as that. Constitution, if we are implementing Constitution of India word by word, so there is no any confusion. But day to day, and what we are doing, we are only interpreting the Constitution by their own ways. Suppose there is a lots of matter in Supreme Court on each and every religion. Suppose someone asks, what is Hinduism? Hinduism simple is way of life. So way of life is fit to each and every religion, like Buddhism, Hinduism, Christianity, Muslim, Jainism, Parsis. Each religion have their own way of life. So we may put it in everywhere. So if we are implementing Constitution word by word, so there is no any confusion, but we are interpreting the Constitution by their own way. States are interpreting their own way, central government interpreting the Constitution by their own way. After that, there are lots of cases in high courts. High court interpreted the Constitution by their own way. Supreme Court interpreted the Constitution by their own way. So it is only a part of interpretation. Therefore, I am saying, first we have to study Constitution of India. If we are able to learn, if we are able to understand the Constitution, interpretation of the Constitutions,
we will it is very easy for us to practice in each and every court. There are lots of judgments on the constitutions. You read the constitutional judgments, it is only a part of interpretation. Otherwise, five years bench of Amnagraj judgment was not set aside by the Jarnail Singh. Same question of law raised at that time and same question of law raised at that time, that was set aside by the five years bench. So it is only a part of interpretation, and so many things are given by the court itself, which is not part of our constitution. So many things like this. I have discussed earlier the catch-up rule. Catch-up rule is not the constitutional provision. The catch-up rule is given by the Supreme Court itself, and the state government and central government is bound by the verdict of the Supreme Court. So therefore, the government of India have issued government orders in the Gazette notifications. So we have to read constitution and try to understand what does it really mean. So there are two things. I request everyone to kindly just keep their mics on mute. Asking a question, then that's really fantastic. And that's actually what sir is also wanting, that it should be an interactive class. But in the meanwhile, I request that anyone who is not asking a question, that kindly I request you very humbly, because I understand that there are a lot of seniors also. So that it happens sometimes accidentally, और technology भी इस किस्म की चीज है कि हम सारे सीख रहे हैं, अभी ऐसी बात नहीं है. Yes, we all are learners. We all are learners. So I request everyone to just kindly take note, और अपन तो इसी के बहाने सीख लें हम, है ना, कि उसको कब क्या करना है, कब वीडियो ऑन करनी है, ऑफ करनी है, और किसी का सवाल रहे ना. इसलिए मेरी ये भी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज जिसके सवाल हो ना वो पूछे जरूर, बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि मेरे पास बाद में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, व्हिच ऑब्वियसली आई फील वेरी हम्बल्ड, और मेरे को बड़ा बुरा महसूस होता है कि वो सवाल उस टाइम. Sir, I have a question. Yes sir. Yes, please. First, introduce yourself, please. Sir, myself Ayush Raj. I am Yes. from Bihar. Okay. जी नमस्कार. I am pursuing BSc honors, but I want to do LLB. Okay. I want to practice in the Supreme Court. Correct. Sir, right to tell about right to equality. What do you want to know about the right to equality? Exactly. Because right to equality है very vast topic. आयुष जी, ये आपकी क्रैश एलएलबी हो रही है. एग्जैक्टली लॉ में यही होता है कि अगर आप कोई पॉइंट पे जानना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली अगर आपको कोई सवाल है, हाँ, तो ये एक बड़ी यूनिक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात अभी निकल कर आई है. एंड आई रिक्वेस्ट आयुष जी, अगर आपके इस पे सवाल है, आप और थोड़ा स्पेसिफिकली इस चीज को पूछिए. So till the time Ayush ji is phrasing his question, sir, there's a yes. question. बीजे के किंता सर का ही क्वेश्चन है ये. So which is that judgment which provides that for carrying out reservation of post there should be a reservation roster. There should be a Reservation roster. reserve roster. It is in first. This reserve roster is firstly Indira Sahni 1992, 3 supplementary, page 1, I think so. There is a roster. After that, in Ahmedabad also there is a roster. Now recently in university that reservation in universities case decided by Supreme Court in 2017. So the government of India newly introduced the 13-point roster. 13-point roster. So Indira Sahni, Ahmedabad, and even it was discussed in Jarnail Singh also. So there are 3-4 cases where we find the rosters. Resa, I will take citation from you and I will share with you. Yes, Sir, definitely. Sir, Yeah, sir, tell about abolition of titles. Abolition of Titles. abolition of titles.
Yes, sir. How can you abolish titles? Sir, because Article 18 says abolition of titles. Abolition of titles? Yes. You are in a democratic country, you have freedom. Yes, You sir. have freedom to choose anything. So if you have chosen the titles, so how can you abolish titles? For this purpose, you have to file one writ petition, PIL, either in High Court or Supreme Court. So two things. First, Kinta sir says thank you. And so I think what Ayushi is referring to is Article 18 of the Constitution, obviously, as he says, which says that no title not being military or academic distinction shall be conferred by a state, no citizen of India shall accept any title from any foreign state. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present, emoluments, or office of any kind from or under any foreign state right to freedom. So again, that's just some thing which I found on the internet. I hope It that is a very vast. No, it is a it's a very vast item. but it's absolutely No comment on this abolition of title. fair enough, fair enough. आयुषी आपको सर का रेफरेंस भी देंगे and आप एक बार elaborately आप बात कीजिएगा. But it's a very good thought जो आपने discuss किया that you want to pursue your LLB and so सर आर्या जी के आर्या जी का इसमें एक वो आया मैसेज आया. He wants to add to this conversation and he says that title means to be called Maharaja or Raja. So this I think goes with the enforcement of the constitution itself. जहाँ उन्होंने बोल दिया था कि अब तो all of these titles have to be abolished as the within itself explanatory. And The titles are still going on in our country. so informally, Unofficially. of course. Unofficially. I have one question. I am Tarun Kumar. I am retired government servant and presently in Delhi. Correct, sir. We are talking about the less representation, that representation is not adequate in the group A services. Why we are not reaching to chief secretary and all that. Prime reason which I think that roster which we are talking about, the roster is not followed in group A services. It is not applicable. As far as I know, because as per DOPT instructions, at the lowest rank of group A services, that reservation is there. But afterwards, that seniority and other things, those are not applicable. That's why we are not getting reservation in promotion as well as adequate representation is not there at the top level. That's what I have felt. If you can just. No, sir. This is the good question you have, because there is a lots of confusion that suppose that chief secretary have only one post. So on the one post there is no any kind of reservation. So it means the reserve category person should not be that he may not be reached at that top level because of the ACR and everything is in the hand of their top officers and higher rank officers. Therefore, the 100-point roster had been introduced by the government itself, and therefore the lots of judgments of the Supreme Courts deciding time to time. Therefore, the reservation in promotion has been introduced by the government itself, so that the marginalized society of this country and SC/ST people will get their rights, and they may also reach the highest level. So there is a therefore the representation of people should be at each and every level, because they have their own population, and because in so many cases Supreme Court also said that reservation is not a demerit. Some people are thinking that reservation is a demerit, but Supreme Court itself decided that reservation is not a demerit. It is only a part of only a kind of representation in the system, so that they also in the main route, so that they may go side by side with the mainstreams. They may not be deprived with their own rights.
there are so many reserve category person who have reaches that level. And because but of the- reservation, they are with the mainstream. Otherwise, if the reservation is not with them, so they are not with the mainstream. Reservation is, you know, what is that reservation first time introduced by the Pune Pact in 1932. That at that time, Dr. B.R. Ambedkar Baba Sahab asked for representation, and it was a Pune Pact, which was a kind of agreement between Baba Sahib Ambedkar and Mahatma Gandhi ji. So therefore, in place of representation, reservation has been given by the agreement. So reservation means representation. Representation of marginal society, SC/ST people should be in the mainstream. Otherwise, they will not get their jobs. that roster is not followed in group A services. I don't know. Sir, therefore, Whether I am saying that the roster is also applicable in Group A services also. it is not followed. After the judgment, of the M. Nagaraj and General Singh, UP Power Corporation, and there are that Suraj Bhan Meena versus Union of India. So there are lots of judgments, but it depends upon the government. Either they are implementing or not. Therefore, the person belongs to scheduled caste, scheduled tribe. The officer of the scheduled caste, scheduled tribe, they are fighting each and every day to implement the roster system. The roster system is only a kind of representation according to their population. Simple as that. Thank you. Thank you. So Mr. SP Singh has a question. Ah. So please. Good evening, everyone. Good evening, sir. Actually, thank you very much, Gautam Sahab. Actually, this is a very good talk. You people have taken the initiative. I must thank all the stakeholders for this great initiative. Actually, my query is actually starting from the base. We have come across the right to education, right to information, and all these things. And as Baba Sahib has started the this representation, and now we are calling it a reservation. So my basic worry is because till now in 21st of century, if a child is going to a primary school, a labor child is going to primary school, he or she is not admitted. So what are the base means and ways that admission is denied, not availability of document? Are you having Aadhaar card and all these things? But now Supreme Court has come out in certain countries in education, Aadhaar is not mandatory, all these things. Why this small issue is going to Supreme Court? Why all stakeholders, education minister, state ministers, deputy commissioner who are the in charge of district, why they can't be made the responsible? How they are denying the admission to the to these people, to the masses? How this country will develop without having the proper literacy? We are talking about the reservations and the rosters in class and all these things. How we should and selection of the chief secretary and DG and at the higher post. As my colleague Mr. Tarun, he is also from department, a retired officer from the Department of Telecom. I am also retired from the Department of Telecom as ITS officers. Due to somehow just with so many struggle, we people have reached to up this estimate, but a lot has to be done. I appreciate your initiative, and the topic is very, very good. This equality. So how this education right? How should be protected a child so that Sir, no one denied the education right for children. Children have their own right. Sir, it is happening. I know it is happening, but it is our duty. It is the duty of the society to place this problem before the system. System is district magistrate, SP, and we have to write this, complain this thing to the higher authorities. Otherwise, previous days after the independence, the schoolmaster, as my father told me that their teachers himself went to their homes
and they call the student, please come to school. So it is our duty. It is our duty to fight for the that student. So education is the fundamental right. No one can deny it. If someone denied, if education or teacher denied, school denied, you may just give one letter to the higher authorities, district education officer, DM, SP, whoever is there. If even you may lodge one FIR. If you are not able to reach the DM and higher officer, there is a police station near about your home. They may lodge a FIR against that teacher, that school, because the up to the class 8, education is free of cost. It is the duty of the state to give education each and every child up to the class 8. Actually, sir, you are right. But people are not empowered. Many of the officers, even I was having one of the work at Meerut in the district, where deputy commissioner, I'm not able, even at my level, I am a senior citizen in my level, I am not able to reach the district magistrate. How a poor people can reach to the deputy, how this FIR and all these things. Actually, this legal protection, the people like you have started Sir, this type of yes, campaign. therefore we have some societies, groups. Yeah. They are already working, so that we can raise this question to the government system, whole system. Right. First, we have to place this problem to your system. Nowadays, system think that every child have got their education, every child is in the school. But you know the situation of the schools. Even if you have surprise visit, so even you can't find 10 students in the class. Even you can't find the teacher also. Therefore, it is our duty, our that NGO, there are NGO, trust, societies duty, even individuals duty to place these problems, this kind of incident, place this system. System is DM and all. If you are not able to reach, then there is a inspector, police, chowki, even a sipai also. Actually, sir, you are right. Only one point on a supplementary query. As we are having in Supreme Court also, some videography is being done and all these things. It is ordered by the Supreme Court and all these things. In some of the cases, procedure, how the even interviews or discrimination is not, equality is not given. So can't we have the CCTV availability? Can't we file any PIL in the Supreme Court? Why can't we go for the CCTV footage? Or we are having each and teacher is having the principal, headmaster, they are having the mobile smartphone. If 10 students are not there, I still remember, as you are telling, your father was telling, my teachers of 60 and 70, 1970, I did my 8th in 1972. When I was sick in 5th class in 1969-68, so they they used to send the boys to catch them the absentee. Yes, from the house. So yes. I still remember, sir, initiative made by that system. Yes. So this type of some technology should be put into the system. All DMs should be asked. Actually, they are having. Can't they take a picture of the children? Why? Sir, already, no. Why 10 system 10 already there is students? a direction. No, sir, there is already direction from the Supreme Court. There is already direction from the Supreme Court, High Court, central government, DOPT, from the education department. There is already direction. Even in the education department, there is a bylaws there. It is a duty of state to give education each and every child. But they are not following they are not following, system. sir. Therefore, I'm saying. Therefore, they should put duty. The attendance in digital form on the website of the district. So yes, it is our duty. If any child is denied by their education, if any child denied by their education, if someone saying is that you don't have the Aadhaar, so it is a duty of it is duty of the citizen of this country who is near about the children. Suppose I am in Supreme Court
and something is happened in the rural area of my home district, Devariya. How can I know that? Only the person around that people, that child, know the problem. So it is our duty, citizens. We have to make aware each and every citizen of this country. So, Yes. if I may most humbly just intervene in this very interesting conversation that was happening, SP Singh Saab, so thank you so much. Very interesting Okay, thoughts. sir. Thank you, Thor, for giving me. And this is Thank actually what inspires us also, because there are what Sir Gautam sir also said, that there is actually from the grassroots till the Supreme Court, if we see how constitutionally things have been framed, there are actually a lot many other faculties also which have been employed. And I understand what I only humbly understand, being and speaking in the light of the Ambedkar sir, that he understood very well that it's not a one-day task, and the Yes. country is forever building itself. हर रोज हम और मजबूत मजबूत बनेंगे, और I think वो एक बड़ी इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. तो इस मामले में सर, I agree with what Gautam has also said absolutely, that how would one person get to the same thing? But I also understand, and I very humbly just want to put solely because of the fact that time is constrained. Otherwise, I would have really, I was also personally enjoying this conversation that you guys were having. Just the fact that हम सारे अगर अपना हमारे हिस्से का जो काम है, जैसे एक टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज का, जिसके बारे में बड़ी कम बात होती है, तो वो क्या जिम्मेदारियां हैं हमारी, बहुत किस्म की चीजें होती हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक यूनिक सी सिचुएशन हो गई, जैसे आपने बताया कि अगर कुछ दिख रहा है जो कि गलत हो रहा है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको किस तरीके से बदला जाए. तो यही है कि सर हमारी भी एक यही हम्बल कोशिश है जो टीम वेस्टलेक्स के बिहाफ पे, कि इस किस्म से, जैसे गौतम सर ने आज अपना टाइम कंट्रीब्यूट किया है हमारे लिए, हमारी बातें सुनने के लिए और हमें थोड़ा एनलाइटन करने के लिए कुछ और यूनिक और इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर, इस किस्म से यही सर, यही कोशिश है सर, इसी किस्म की कोशिशें हैं हम इतना कर सकते हैं इस मोमेंट पे. Correct. We have to pay back to society. Whatever we learn, we have to pay back to society. जी. एंड सर इसी के साथ में एक छोटी सी चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि हम इसी किस्म से वीकेंड क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हमारा ये स्टडी ग्रुप है वेस्टलेक्स फ्री ऑनलाइन कम्युनिटी क्लासेस का. तो इसका एक चैट का एक हमारा एक चैट ग्रुप है जिसमें हम अपडेट शेयर करते हैं जब जो क्लासेस होती हैं, जो फैकल्टीज होते हैं. उसका लिंक अभी हमारी टीम ने, मोनिका ने अभी शेयर किया है चैट में. तो देखो, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अगर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वो इस किस्म से जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ. और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, बड़ी मेहनत लगती है कि जैसे अब गौतम सर ने भी बड़ा टाइम निकाला. बड़ी पहले हम यूजुअली दिन में क्लासेस करते हैं, तो आज फॉर यूनिक चेंज इट्स हैपनिंग इन द इवनिंग. Whatever circumstances are such that people are actually बहुत ही बेहतरीन लोग हैं इस देश में. मेरी इतनी समझ है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, एक से बढ़कर एक लोग हैं और सारे बहुत अच्छे तरीके से अपना योगदान करने की कोशिश करते हैं. और वही मैं समझता हूँ जो इक्वालिटी, अगर हम बाकी सारी चीजों में बात करते हैं तो योगदान में भी बात करते हैं ना, कि सारे लोग मिलके योगदान करते हैं अपने तरीके से. तो मेरा आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है, तो चैट ग्रुप को भी फॉलो करो. और साइमल्टेनियसली जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर जो लोग और कहीं पर देख रहे हैं, आपने यहाँ तक देखा है, तो पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत. आई होप आपको हर हालत में कुछ अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग आपको समझने के लिए मिला होगा. साइमल्टेनियसली बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं सर. ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ट्राई टू बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर इन दिस रिस्पेक्ट. एंड टाइम बहुत कम है, बिकॉज जो हमने सर से टाइम मांगा तो सर अगेन थैंक यू सो मच. बट सर एक क्वेश्चन है जो कि एक हमारे संजीव जी हैं, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन. वो बड़ा रेगुलरली और रिलीजियसली वो अपनी हमारी सारी क्लासेस भी अटेंड करते हैं, एंड साइमल्टेनियसली उनके बड़े इंटरेस्टिंग थॉट्स भी हैं. एक करंटली एक पिटिशन है जो कि पेंडिंग है इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग सर्गेसी एक्ट एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एक्ट 2021. तो इसके रिस्पेक्ट में सर मैं बड़ा ब्रीफली एक सवाल रखना चाहूंगा. एंड बाकी एसपी सिंह साहब, आप पे आई विल कम टू यू, बिकॉज आई सी कि आपके पास अभी भी कुछ है इसमें कंट्रीब्यूट करने के. जस्ट फॉर 2 minutes आई वांट सर्स व्यूज ऑन. तो आई जस्ट रीड आउट संजीव जी का जो सवाल है. It says, is there equality in Assisted Reproductive Act 2021 and Surrogacy Act 2021, where January 25th onwards only couples, divorced women and widowed women can take or avail the procedure of surrogacy, whereas entire single men and women
other single persons have been kept out completely. So he further goes on to state, and अभी मैं सर की वो पढ़ रहा हूँ because he is absolutely dedicated and committed to this cause. तो सर आपका view इस पे जरूर, I think. ये तो expert opinion लेना पड़ेगा इस पे. I'm not ठीक, expert on this. एक बात तो मैं चाहूंगा कि इक्वल को हो जाए आपकी उनके साथ ही, but I just come to the substantive part of his question. He says, so where is the equality criteria which Baba Saheb Ambedkar has mentioned, and Ministry of Health and Family Welfare, he feels, has completely violated it by depriving single persons of all categories of this boon given by science, which it should have the option of availing. At the same time, उनके और भी काफी elaborate सवाल है. मैं तो चाहता था वो खुद ही पूछते. नहीं, but मैं इस सवाल को summarize करूं तो वो इन शब्दों में आ पाएगा और इस तरीके से आ पाएगा कि अगर एक ऐसा कानून है जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन लाता है किसी किस्म से, जो कि एक प्रोजेनी, अगर एक बच्चा जो जिन लोगों की शादी है या फिर जो अदरवाइज भी लोग हमेशा सोचते हैं दैट देयर शुड बी चिल्ड्रन, बच्चे होने चाहिए, और बच्चे नहीं होते तो हम भी नहीं होते, हम भी किसी के बच्चे हैं. तो क्या इस वजह से कि वो शादी नहीं कर पाए तो वो सिंगल रह गए, तो क्या वहां पर आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी की बात करता है, क्या कहीं ना कहीं पर इक्वालिटी में, वैसे ही नॉर्मली इक्वल को बात कर लेते हैं, मैटर ऑफ सब्जेक्ट से कोर्ट्स अपने रिस्पेक्ट में ज्यादा अच्छे संज्ञान में है, क्या हो रहा है, देयर आर एडवोकेट्स जो कि इस मैटर को कंटेस्ट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग, एंड अगेन सिंस द सुप्रीम कोर्ट इज you may fix equality anywhere. बट एक व्यू चाहते हैं सर, वो एक अपना उनका एक नजरिया है, क्योंकि उनका एक विचार है, तो वो एक नजरिया जानना चाहते हैं इस रिस्पेक्ट में कि क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है जैसा उनको महसूस होता है कि अगर जो सिंगल लोग हैं, जितने भी लोग शादी नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, और खासकर सिंगल आदमी है, कि उनको तो बिल्कुल ही कोई किसी किस्म का जो दिखता है उस हिसाब से तो कोई उनके पास अधिकार नहीं है, एंड हिज थॉट इज दैट डज इट इन एनी मैनर infringe the right to equality. About surrogacy. जी सर, surrogacy. Yeah, it is a pure technical question. I'm not able to answer. I understand. Pure technical question. Because, frankly speaking, I don't have much idea about the surrogacy also. I have no much idea about the surrogacy also. No, so there is a pure technical question. I'm not able to answer on this. Absolutely, sir. Because law is very wide. Law is very wide. It is kind of ocean. नया आया है इस टाइम पे, और ये है, I will share a copy of it with you also. और संजीव जी का वही उनका ख्याल था, तो वो पूछने और हमारी कोशिश ये होती है कि जो सवाल आए, the interest of freedom of expression, correct. जो सवाल आगे जा सके. सर प्रतीक्षा जी का एक सवाल है. प्रतीक्षा जी, क्या आप खुद पूछना चाहोगे? मैम. हेलो जी. मेरी आवाज आ रही है? जी सर, वी सर आपकी आवाज आ रही है. सर प्रतीक्षा मैम, वील टेक योर क्वेश्चन इन जस्ट अ मिनट. हेलो, ये विष्णु शर्मा सर हैं, ही इज वन ऑफ आवर मेंटर्स एंड गाइड्स, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज मध्य प्रदेश. सर प्लीज, आपकी आवाज आ रही है बहुत बेहतरीन तरीके से. सर प्लीज आप सुनाई दे रहे हैं सर हमें. हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है सर. आ रही है? जी सर. मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अनटचेबिलिटी है, ये छुआछूत है, ये किसकी बनाई हुई है? आदमियों की बनाई हुई है ना? करेक्ट सर, करेक्ट. पर उनके नेचर में तो कोई फर्क नहीं है आज तक. यस सर, कंटिन्यू. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सर अनटचेबिलिटी तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गई है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सवाल भी इससे रिलेटेड ही है. उनका सवाल, क्या पूछना चाहोगे भी इस मोमेंट पे जल्दी से? हेलो, एक बार पढ़ देता हूं प्रतीक्षा. सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि इवन दो
लिटरेसी रेट हाई हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी अनटचेबिलिटी अबॉलिश होनी चाहिए, बट स्टिल हम आजकल देखते हैं कि इवन इन द अर्बन एरियाज अनटचेबिलिटी के केसेस काफी हाई हो रहे हैं. सो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाई आर वी लैकिंग इन इम्प्लीमेंटिंग मतलब डिमोलिशिंग अनटचेबिलिटी प्रॉपर्ली? पति अनटचेबिलिटी तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट होते ही खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफिशियली, but still this untouchability, casteism, discrimination, everything is going simultaneously. So you have right to raise your voice against that, and you have your fundamental right to raise your this question before the system. Otherwise अभी आप कोर्ट में क्वेश्चन ले जाओ कि you are facing untouchability, how can you prove this untouchability? There is lots of things you're not able to prove these things. Untouchability is happen with you. So first of all you have to prove these things. Even the atrocity act की जो implement हुआ है पर वो properly implement ही नहीं हो पा रहा है, आप prove नहीं कर पाते हैं. तो यदि इस तरह की चीजें हैं तो आपको कोर्ट के सामने लानी पड़ेगी. तो कोर्ट ने तो बोला है कि there is no untouchability, but after 70 years still it is going on. तो इसके लिए तो हमें सिस्टम को और सोसाइटी को अवेयर और एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई नाउ वी आर इन 2023 एंड वी आर एजुकेटेड, लिटरेसी सब कुछ है, फिर भी ये साथ साथ 70 चली रही है. तो हमें पीपल को, सोसाइटी को अवेयर करना पड़ेगा और एजुकेट करना पड़ेगा. अदरवाइज सिस्टम भी जो है ना आपका, गवर्नमेंट भी हर जगह नहीं पहुंच सकती, नहीं कर सकती है. जी पत्रिजा जी, ये हमें और आपको मिलके ही जो सोसाइटी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा. जी वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल. सर एक चीज और सर, जैसे सरोगेसी में आपने बोला कि आपके पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन सर ऑन द फेस ऑफ इट इफ वी सी से इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो आर्टिकल 14, 15 और 21 सर ऑन द फेस ऑफ इट इफ वी लुक, व्हेन दे आर सेइंग ओनली कपल्स कैन डू इट, ओनली डाइवोर्सी एंड विडो गर्ल्स कैन डू इट, so single men are out, single women are out. So on the face of it if we look, sir, don't you think so sir, पूरा discrimination हो गया है sir by the Ministry of देखो मैं तो जो Family and Health Welfare. करेक्ट देखो नेचुरल सिस्टम यदि समझे हम आप, only female can produce child, ठीक है सर. हाँ, मेल तो नहीं कर सकता है सर. डोनर तो अवेलेबल है ना सर. अगर सर फीमेल को मेनोपॉज हो गया, नाउ सर मेनोपॉज हो गया या कुछ भी है या डाइवोर्स हो गया उसका, डोनर गर्ल इज अवेलेबल ऑफ 25 ईयर ओल्ड, राइट सर, एंड देन सरोगेट इज अवेलेबल सर. यस सर, किसी को जेन्युइन तकलीफ हो तो क्या करें सर? नाउ मैरिज इज नॉट इन योर हैंड्स, whether you will not get married, someone does not get married by 40, 50, what do you do then? This is a pure new question of law. Yeah, you can file. But on the face of it, but on the face of it equality तो नहीं है ना सर. अपन जैसे ही बोलता है कि नहीं ये अलाउड नहीं है, ये नहीं अलाउड है सर. अकॉर्डिंग टू यू इट इज नॉट इक्वालिटी. हाँ, तो आप इस पे एक पीएल ला सकते हैं. लेट द कोर्ट विल डिसाइड इट दिस इशू. हाँ, एंड सर मेनी पीपल हैव, ये पूरा एक प्योर एक न्यू क्वेश्चन ऑफ लॉ है. या सर एक और चीज लूंगा सर आपका टाइम. सर एम्ब्रियोज बहुत सारे लोगों ने फ्रीज किए हैं जिसकी बहुत हाई कॉस्ट है सर. 7 लाख होता है, 21 लाख होता है प्रोसीजर का. तो पीपल हैव टेकन लोन्स, दे हैव टेकन एफडी ब्रेक कर दिया है. एंड सर अचानक से जेन 25 को आता है कि नहीं सिंगल मैन नहीं कर सकते, सिंगल वुमेन नहीं कर सकती, तो सब उनके सब काम रुके हुए हैं. एंड मजेदार बात यह सर उनकी कट ऑफ लिमिट 55 एज ऑफ मैन है और 50 इयर्स वुमेन की रखी है. तो कल को अगर उनका ऑर्डर भी आता है उनके फेवर में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, डॉक्टर तो यही बोलेगा तुम्हारा 55 इयर्स का एज तुम्हारा खत्म हो गया है, और सर ये बोलेगा तुम्हारा 50 का हो गया है. इसका मिसयूज ना हो, इसीलिए कोर्ट ने, हो सकता है मिसयूज ना हो, इसलिए कोर्ट ने ऐसा कुछ मतलब गवर्नमेंट जो भी ने ऐसा किया हो, बट दिस प्योर न्यू क्वेश्चन ऑफ लॉ है. और ये ऐसा क्वेश्चन आज तक रेज नहीं, आप रेज कर सकते हैं इसको. It will decide by Supreme Court under Article 32. हाँ, so even if we win after 1 or 2 years, but the cut-off limit is gone. 55 है. अब जज दे रहे, अपेक्स कोर्ट इज वेरी स्लो सर. 2-2 महीने की डेट, 4-4 महीने की डेट. नहीं, अपेक्स कोर्ट इज वेरी फास्ट. नहीं सर, on these kind of questions, Supreme Court is very fast. हाँ, and judgment is given at the age of 56. डॉक्टर तो बोलेगा 55 हो गया ना, 55 plus 1 day हो गया, we will not take you. Court does not say that sir. नहीं तो judgment will implement prospectively sir. Prospectively implement करेगा ना. अच्छा. तो सर आपके हिसाब से सर पर्सनल ओपिनियन आपका क्या है? लुकिंग ऑन द फेस ऑफ इट सर, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल साइड, सर आपको नहीं लगता सर इक्वालिटी है, वो
नहीं तो डिप्राइव हो गई है सर। मैं बताऊं ये इस पे एक तो टेक्निकल नहीं है, फिर भी बोलूं हाँ कि मैं जनरली बोलूं, मतलब नेचुरल जो लॉ है, नेचुरल जो लॉ होता है, जस्टिस होता है, हाँ। मतलब अब जो मैं समझ रहा हूँ, मेल को तो खैर अब यहाँ पे इक्वलिटी राइट नहीं कर सकते, नहीं तो अदरवाइज मेल भी प्रेग्नेंट होना शुरू कर दें। नहीं, सर डोनर इज अवेलेबल नो सर, डोनर करेक्ट है, यू आर दे रहा है करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि बट उन्होंने मेल डोंट रोक हैव दिया दैट है, राइट, वो अब अवेल नहीं कर सकते सरोगेसी मेथड। मेल पर्सन डोंट हैव देयर राइट टू प्रोड्यूस। नहीं प्रोड्यूस की सर, वो अपने स्पर्म दे रहे हैं, जो जेंट्स हैं वो अपने स्पर्म दे रहे हैं, डोनर इज अवेलेबल एंड सरोगेट इज अवेलेबल। अभी अब नई शादी हुई तो अभी क्या नहीं करेगा? पता है कि उसका ना फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, सो मेनी थिंग्स हैं उसके ऊपर। सर अभी वो तो अभी किसी की सब बच्चा भी और वाइफ एकदम अर्ली एज में मर जाए तो सब बच्चा तो पाल सकता है ना हस्बैंड, सर ऐसा तो नहीं है। क्या ना लॉन्ग डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन ना कोर्ट को डिसाइड करते दो, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है आपका ये नया। अच्छा सर एक चीज और सर, क्रिकेटर कामले सर, ही हैड फाइल्ड अ लॉ सूट, तो उसमें कस्टडी कामले को मिली, क्रिकेटर कामले गॉट, द वाइफ डिड नॉट गेट द कस्टडी ऑफ चाइल्ड। सर उसने भी अकेले पाला तो सही ना सर, उसको मालूम है हार्ड है लेकिन पाला तो सही ना सर। सो यू कैन नॉट डिप्राइव एनीवन ऑफ द चाइल्ड वेदर इट इज अ जेंट्स आल्सो। Correct. We'll have another conversation soon on topic of reproduction or maybe with respect surrogacy. to family. On surrogacy only. Surrogacy में सर एक क्लास हमारी हो चुकी है एक्चुअली। अच्छा केशव जी आप प्लीज रिक्वेस्ट, आप एडवोकेट मोहिनी को कट ऑफ लिमिट के बारे में तो एक्सटेंशन के बारे में तो बात कीजिए आप, एटलीस्ट यू आर आल्सो अवेयर ऑफ द व्हाट इज हैपनिंग। Humble request, Sanjeev ji, humble request that considering that we have very limited time and circle time हमारे पास है, everyone else is also there and उनके सवाल हैं, है ना, जो अपनी जगह पे that they are also equally passionate about जैसे आप हैं। तो एक बार we'll just give a moment to every single person. SP सिंह साहब का I think सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, if you want to please continue that sir, but in short only I will have to request because now we are going over time and sir is here, sir का time already है, बाकी सर को भी डिनर का टाइम हो रहा है, तो I would not want कि पहला लास्ट क्वेश्चन ले लो SP सिंह सर का है जी। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, सिंह साहब आपके ऊपर आएंगे, बस 1 minute I will take, there are a few other messages which are there which I will just read out. So there is अच्छा SP सिंह साहब का ये injustice to anywhere is a threat to justice everywhere। yes sir ये SP सिंह साहब ने ये चीज कही है, साथ में एक सुशील कुमार जी ने कही है biological term does not meet with donor। I think ये पिछले कन्वर्सेशन के रिस्पेक्ट में था सर। मैं बस ये बताना चाह रहा था जैसे पे बैक टू सोसाइटी के बारे में, और आपका जो इनिशिएटिव है उसको सभी का थैंक्स है। काफी लोग जुड़े हैं आज मेरे कहने से। तो मेरे पास सीनियर एडवोकेट्स जिसमें चौहान साहब, गौतम साहब और कई लोग हैं, मिलिंद साहब, बैरवा साहब, सबके नंबर है। I have got 99 numbers of the senior advocates across the country, और मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट से उनको मैसेज भेजा और कई टेलीकॉम ऑफिसर को भेजा। मेरे विचार से आपने देखा होगा कि आज का पार्टिसिपेशन ज्यादा हुआ होगा, जो आप लोगों ने लिंक दिया हमें पता नहीं था सर, एक्चुअली आज पता चला। बताया आप जी सर मैं बस यही था, आप लोगों ने खैर काफी आंसर कर दिया। मेरा आप लोग हमारे पीछे से बैक पे खड़े हो, बैकबोन हो, तो इसमें एक जो आदमी चाहे वो डाउन रोड है किसी भी लेवल पे है, विलेज लेवल या कस्बा लेवल पे, तो हमें पता है कि भाई हमें एक गाइडेंस और असिस्टेंस सुप्रीम कोर्ट तक मिल जाएगी, तो उससे एक आदमी एम्पावर होता है। तो आई अप्रिशिएट। I will tell you one thing, गौतम सर की एक सबसे अच्छी बात है that whenever you will meet him in the Supreme Court, he will always have a smile on his face and he will always be busy। कुछ ना कुछ ये कर ही रहे होते हैं और सेवा का काम ही कर रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है। I am always free for my society। यस सर, मैंने देखा वो छोटी सी वीडियो जिसमें चंद्रचूड़ साहब आए थे और उसमें ओपी गौतम साहब, वो मेरे रिलेशन में पढ़ते हैं, ओपी भारती जी और गौतम साहब मैंने देखे थे उस वीडियो में। तो वो मैंने देखी परसों जो 14 तारीख की थी। आई अप्रिशिएट इनिशिएटिव को कि फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये सेलिब्रेशन। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। अच्छा अब मेरी एक रिक्वेस्ट है बिफोर वी पार्ट वेज कि एक फीडबैक फॉर्म है आज की क्लास का, जो कि हमने जस्ट अभी मैंने चैट में भेजा है, और जो लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी आई विल ट्राई टू अपलोड। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर जस्ट 1 सेकंड सर प्लीज, वेरी हम्बली, एंड आई विल एब्सोल्युटली आपको सर मेरा करियर से रिलेटेड क्वेश्चन। आयुष जी पक्का आपके ऊपर आएंगे, आप तो लॉ स्टूडेंट बनने की चाह रखते हो, तो आपके तो बिल्कुल हम साथ में हैं। तो ये फीडबैक फॉर्म है,
ये फीडबैक फॉर्म मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ही छोटा सा है, रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार भेजिएगा तो हम सर के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द फीडबैक ऑफ द क्लास। तो एटलीस्ट दैट इज अगेन सर, यहाँ कोई पैसे है नहीं किसी किस्म के, सारे काम प्रो बोनो हो रहा है, सारा काम सेवा का है, तो वो सेवा एटलीस्ट पता तो चले कि क्या उसका इफेक्टिव कुछ फायदा हो पाएगा। करेक्ट। रिक्वेस्ट प्लीज, फीडबैक फॉर्म मोनिका ने फिर से शेयर किया है, आई वेरी हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन काइंडली प्लीज टेक जस्ट 2 मिनट्स आउट, बहुत ही छोटा सा, उसको भर दीजिए। आयुष प्लीज आपका सवाल पूछिए। सर से क्वेश्चन पूछना है। जी हाँ सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ सर, कितना साल लगता है एक अच्छा लॉयर बनने में? कितना साल लगता है? हाँ, वर्ष। आप मेरे से पूछोगे तो मैं आज भी अच्छा लॉयर नहीं हूँ, डेली लर्निंग करना पड़ता है। वो तो समझ रहे हैं सर। देखो सीधा सा है कि लॉ करने के बाद आप जितना टाइम कोर्ट में स्पेंड करो उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतनी जल्दी आप सीखोगे। कोर्ट में आना जरूरी है, चाहे सर्दी हो बरसात हो कुछ भी हो, कोर्ट में आना जरूरी है आपका। जितना कोर्ट में टाइम अपना दोगे उतनी जल्दी आप चीज सीख जाओगे। तो एक अच्छा लॉयर बनने के लिए कोई अच्छे कॉलेज से या नहीं, नॉर्मल कॉलेज से? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, यदि लॉ पास भी कर लिया आपने तो कोर्टें आपको सब सिखा देती हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको डेली कोर्ट में आना है, 10 से 4 साढ़े 4 तक कोर्ट में अपना समय व्यतीत करना है। कोर्टें आपको खुद सिखा देंगी, 3 साल में आप बढ़िया लॉयर बन जाओगे यदि कोर्ट में डेली आप अपीयर हुए, डेली कोर्ट में जाके बैठे आप। अच्छा, 3 साल में आप बढ़िया लॉयर बन सकते हो। सर आपकी परमिशन के साथ मैं इसी चीज में ऐड करना चाहता हूँ आयुष जी के लिए इसी सवाल के लिए, और आप ही की कहीं भी बात ऐड करना चाहता हूँ जो आपने मुझे कही थी एक बार, बहुत ही खूबसूरत वो बात थी और वो एडवाइस बहुत अच्छी मेरे लिए है, एंड आई होप सबके लिए उतना इक्वली ट्रांसलेट करे। तो मैंने भी एक बार बिल्कुल सिमिलर सवाल एक आयुष की तरह पूछा मैंने सर से कि सर हम तो सीखने के इच्छुक हैं, व्हाट शुड बी द बेस्ट मैनर ऑफ गोइंग अबाउट इट। तब गौतम सर ने कहा था कि देखो, ऑब्जर्व करो और सीखो। बोलते अगर तुम इस गलत फहमी में रहोगे कि कोई तुम्हें पकड़ के बिठा के सिखाएगा तो बोलते फिर तुम जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे। बोलते देखो, ऑब्जर्व करो और सीखो, अपने आप सीखोगे, अपने आप जो बेहतर से बेहतर तरीका है आप अपने आप उस दिशा में बढ़ते जाओगे। सर थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ वंडरफुल एडवाइस। सर एंड बिफोर वी लीव आई थिंक दास जी का एक सवाल है, सर प्लीज आप एक बार इन शॉर्ट में, बिल्कुल लास्ट ही ये सवाल है, इसके बाद डिड नॉट टेक एनी फर्दर क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स आप प्लीज वो चैट में आप भेज देना जो फीडबैक फॉर्म में, उसके अंदर सवाल लिख देना, मैं सर तक कम्युनिकेट करवाता हूँ या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बता भेज सकते हैं। दास सर प्लीज। सर आपने हैंड रेज किया हुआ है और आपकी आवाज म्यूट पर है। मिस्टर गरीब दास? गरीब हाँ सर, गरीब दास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताएं। माय डॉटर इज स्टूडेंट ऑफ बीए फर्स्ट ईयर। करेक्ट। बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर। ओके। तो सर उसके करियर के विषय में कुछ जानकारी दीजिए, कैसे क्या करें। जी फर्स्ट ईयर में है जी, बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर कर रही है। ठीक है, आप गौतम करने दीजिए। हाँ, उनको एलएलबी करने दीजिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए। और बीच में जब टाइम लगे तो इंटर्नशिप करा दीजिए कहीं भी। जी वो इसे ज्वाइन की हुई है, आपका लेक्चर ज्वाइन कर रही हो गाजियाबाद से। मैं अच्छा, बहुत बढ़िया है। इंटर्नशिप जो टाइम टू टाइम इंटर्नशिप कर लें, उसके बाद अपना जो है, यदि जुडिशरी में इंटरेस्टेड है तो सिविल जुडिशरी की तैयारी कर सकती हैं, एडवोकेसी की लिटिगेशन में इंटरेस्टेड है तो हाई कोर्ट से प्रैक्टिस या सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत सारे कैरियर है, वुमेन के लिए तो बहुत सारा कैरियर है इसमें, और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। यदि कोई भी लड़की जो है यदि इसको कैरियर बनाना चाहती है तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसमें। बस थोड़ी सी जरूरत है मेहनत की और एक लगन की और कंटिन्यू कोर्ट में आने और जाने की। पर मेन है कि उसका रुचि होना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जी सेल्फ इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक वकालत नहीं हो सकती। वकालत के लिए एक जुनून और एक सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरत है। कोई ये सोचेगा कि यदि कोई मुझे सिखा देगा या एक कैरियर है मुझे, मैं जाते ही मैंने अर्निंग करना शुरू कर देना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी तो अगेन सर सवाल तो आई है और मेरी आवाज भी मुझे वापस आ रही है, तो आई थिंक इट इज एम्पल टाइम ये समझने के लिए कि आज की शाम हम सर का बस अब सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं। थैंक एंड यू। रियली
यू सर, हर किस्म की बात हुई यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एक इंटरेक्शन आपके साथ हो थैंक पाया, यू सर। सौभाग्य मिला आपसे बात कर पाने का आज, और आपने कितना इंटरेक्टिव आपने किस्म से आज क्लास को कंडक्ट किया है, ये टाइम भी आपने हमें सॉरी, मैं सॉरी करूंगा, मैं एक लेक्चर नहीं दे पाया क्योंकि मैं एम नॉट लेक्चर ऑफ प्रोफेसर। नहीं नहीं, लेकिन सर आपने, सर मैं चलिए आपसे एक बोली बात करता हूँ कि एक बात आपने मुझे कही थी, एक शब्द आपने कहा था जो मेरे को बड़ा इंट्रिग करता है। मैं आपको सच बताऊं तो मेरी मीडिया वालों से बात हुई थी एक बार, हाँ वो मिल गए थे, कहीं टकरा गए थे किसी बात पे, पता नहीं क्या क्या था, तो उनका मेरे पास सवाल आया था, बोलते वो एक पर्टिकुलर आपने एक चीज मेंशन की, बोलते उसके बारे में सर हम जानना चाहते हैं। क्या? मैंने कहा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने मेंशन किया था, तो बड़ा हॉट टॉपिक है इस मोमेंट पे, बट अगेन अब सर अब मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता है उसके नाम लेते साथ ही कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, बट होपफुली सर आपके साथ फिर हमें सौभाग्य मिलेगा बात करने का, डिस्कस करने करेक्ट का। करेक्ट। We'll have this conversation with you once again. Thank you so much to everyone who has थैंक यू। participated. And again, it's a very unique topic, और अंबेडकर सर के बारे में तो जितनी बात की जा सकती है कम है, उनके विचारों के बारे में जितना सोचा जा सकता है कम है। हमारा देश, जो कि मेरी समझ में, और शायद हम सारे यहाँ मौजूद हैं, एक स्वर में एक बात बोल सकते हैं कि भारत जय हिंद, और सबसे प्यारा देश हमारा। तो उसके पीछे बहुत लोगों का बहुत संघर्ष और बहुत किस्म की मेहनत लगी है, और मैं तो क्या ही बोलूं, मतलब मेरे पास तो बहुत मैं तो अपने आप को एक स्टूडेंट तो ज्यादा सवाल पूछता हुआ अच्छा लगता है, बोलता हुआ कम लगता है, पर तब भी ये मौका मिलता है हमें बात कर पाने का, हमारे सीनियर्स हमें ये मौका देते हैं डिस्कस कर पाने का, इसका ये सौभाग्य है हमारा। आप सब जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम ये बात कर पाते हैं, बात को कंटिन्यू कर पाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आप सबका नमन है, आप सबको शुक्रिया अदा है। जितने हमारे फैकल्टी हैं, गौतम सर ने आज इतना वक्त निकाला हमारे लिए, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एंड आई नो एंड आई प्रे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ये जो मैसेज रहा है आज ये पहुंच पाए। एंड विद दैट सर, आई प्रे टू यू एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आपकी परमिशन के साथ आज की क्लास को खत्म किया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन हु हैज जॉइंड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। प्लीज ऐसे ही हमारा चैट ग्रुप अगर आप ज्वाइन कीजिए, कुछ बताइए आप, बहुत एक्चुअली बड़ी मेहनत लगती है सर कि इसके लिए रिक्वेस्ट करना, जो फैकल्टीज हैं उनको भी इनवाइट करना, उसके बाद क्योंकि फ्री है, पैसे देखा है लोग अगर 10 रुपए भी देते हैं ना कहीं, तो अगर नहीं भी होता अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं उसके अंदर कि भाई आओ आओ ज्वाइन करो, बट जहाँ पर फ्री होता है वहां पर लोग रजिस्टर करने के बाद भी एक पल को सोचते हैं यार क्या करना है, कुछ दिया तो है। तो यार देखो, अगर जेन्युइन सेंस में जो आज बात हुई थी सेवा वाली, अगर उसके लिए हम सच में अगर वो अपने हिस्से का काम अगर कर सकें, तो एटलीस्ट इतना है कि जो एक अच्छी और एक जेन्युइन बात हो रही है उसको हम सपोर्ट कर सकें। हर किस्म की चीज होती है, मैं बहुत गलतियां करता हूँ, मुझसे शायद कभी कोई गलती हो जाती हो, उसी को आप अपने रिस्पेक्ट में आप बताएं, हमें सुझाव दें किस किस्म की चीजों पर बात की जा सकती है, करनी चाहिए। और अगर कोई फैकल्टीज हैं जो आप जानते हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो बहुत अच्छे उनके विचार हैं, उनका भी हमें बताइए। आप जैसे बता सकते हैं, रीच आउट कीजिए, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, थोड़ी हम भी कर रहे हैं, है ना, मिलके चलते हैं, मिलके एक संघर्ष करते हैं। आज सर की तो बहुत सारी हो गई, एंड थैंक यू केशव।